तो मैं आपको क्वेश्चन पूछा था, आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, if I wanted to access the data of one class into other class, what is the options we have? Yeah, Lucky. Hmm. Inheritance. Inheritance. Okay. Can we access the data of one class into another class without using inheritance? Yeah. Can we use? Can we access? Hmm? No, we cannot access, right? Mayuri, नहीं कर Yeah. सकते, नहीं कर सकते. Yes. But if you wanted to access the data of one class into other class, so यहाँ पे करने का जो पहला तरीका होता है, if I wanted to access the data of one class into other class, पहला तरीका पहला तरीका मेरे पास होता है, which is what, using inheritance. ठीक है, inheritance. अगर बोलता है कि आपको inheritance यूज नहीं करना है, but still you wanted to access data of one class into other class, do you have any options? Yeah, you have the option. And what is that option? Which is aggregation. ठीक है, okay, is that clear? Yes. Second option is aggregation. So what is this aggregation? So guys, uh, do you as well get the feeling that aggregation is something related to the agriculture? ये सुन के तो लगा. अच्छा, बट ये एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है. तो इसमें हमें कोई एग्रीकल्चर नहीं करना. ओके, तो the if I wanted to access the one if I wanted to access the data of one class into other class, what are the options we have, guys? Inheritance and aggregation. Inheritance and aggregation. One more, Lucky. What are the options we have to access data one class into other class? Yeah, Lucky. Sir, can you hear me? Yeah, yeah. Can you hear me? Yes, I can, but sometimes you can't hear me. अच्छा, आई कांट हियर यू. अच्छा, अभी Yes, अभी कर पा रहा हूँ, अभी आ रहा है साउंड. yes, ओके. So if I wanted to access the data of one class into other class, guys, we have two options. First option is inheritance and second option is aggregation, right? yes, Okay. So now मैंने आपको बताया था inheritance is a relationship ना. Hmm. yes, Suppose as we have inherited from a- like our whole ancestors there, we have been inheriting, continued inheritance हो रहा है. तो yeah, it is a relationship, right? you are you have a relationship with them ना. हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हमारे जो ग्रैंडफादर है ना उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बराबर. बराबर नहीं बोल सकते ना, बिकॉज जो आप हो उनकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास में आ रही है. बताइए, समझ आया? yes, Yes. तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते कि इनहेरिटेंस हम मेरे पास में प्रॉपर्टी है, इन्हें मेरे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मेरे में दिख रही है, बट आई मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि नहीं मैं उनका, वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना आप, बोलोगे भी नहीं ऐसा कभी, बराबर ना, है कि नहीं? सो या इनहेरिटेंस का मतलब होता है यू हैव इज अ रिलेशनशिप. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेंस इज व्हाट, इज अ रिलेशनशिप और व्हाट. तो आप बोलोगे इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप, राइट? ठीक है. सेकंड वन वी हैव एग्रीगेशन. और एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन फॉलो करता है हैज अ रिलेशनशिप. क्या? हैज अ रिलेशनशिप. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. इज अ रिलेशनशिप एंड हैज अ रिलेशनशिप. तो इनहेरिटेंस तो आपको पता है ही कि वो इज अ रिलेशनशिप फॉलो करता है, और एग्रीगेशन क्या करता है? हैज अ रिलेशनशिप फॉलो करता है. अब एग्रीगेशन में पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट एग्रीगेशन, इट इज अननोन. ओके, बट वी विल सी व्हाट इज एग्रीगेशन मींस. ओके, इज दैट क्लियर? फाइन. लकी, मेरी, इतना क्लियर है? आगे बढ़े. Okay, will you just give me some response? I'm audible. Mayuri? Yes. Okay, Lucky, can you hear me? yes, Okay. मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. आई विल जस्ट आस्क यू सिंपल क्वेश्चन. You have this class. Okay, you have this class
and suppose this class is a bank. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे कोई रॉबरी करने नहीं लगा रहा हूँ, मैं बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप रॉबरी मत करना, ठीक है? सो दिस इज बैंक वी हैव, एंड ऑफ कोर्स बैंक विल कलेक्शन ऑफ व्हाट, यू नो व्हाट इज द बैंक कंटेंट, राइट? है ना लकी? हम्म, लकी मयूरी, है ना? तो मेरा साउंड आ रहा है, आप कंफर्म करेंगे? Yes. ओके, सो सपोज वी हैव अ बैंक क्लास, सो क्लास बैंक। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। So, can I say, guys? Can I say, let's say, Mayuri? Okay, okay, Mayuri. I will just give you something. If I will give you the object of bank. Okay. Lucky, have you rejoined just now? Mm-hmm. Lucky, Lucky ने रिजॉइन किया है? अच्छा, मुझे समझ नहीं रहा। Lucky, can you hear me? Okay, okay, guys. Okay. See, I have a class bank, है ना? Okay, and Mayuri, I will if just try to understand it very easy. Okay, if I will just give you the object of bank, yeah, Lucky, can you hear me? Yes, I can hear you. कहाँ पे चले जाते हो, बीच बीच में छोड़ के चले जाते हो, हाँ? सर, मैं नहीं छोड़ रही हूँ, वो ऐसे अपने आप ये हो जाता। ओके, एग्रीगेशन को समझे अभी? हाँ। देखो, सपोज वी हैव अ क्लास बैंक, राइट? है ना? एंड यू नो व्हाट बैंक विल हैव, वी हैव अ बेटर आइडिया व्हाट बैंक कंटेन्स, राइट? है कि नहीं लकी मयूरी? Yes. Okay, suppose, okay, let's say Mayuri. Okay, we have a Mayuri, yeah, and we have, okay, okay, just think, if I will just give, if I can give, if I will, not can, if I will just give the object of a bank to the Mayuri, अगर मैं मयूरी को ऑब्जेक्ट दे देता हूँ किसका, बैंक का, if I will give the object of bank to the Mayuri, okay, can we say Mayuri can access everything which is written inside a bank, which is here inside a bank? Yeah, लकी, मयूरी समझ आया क्या बोल रहा हूँ? ओके, देखो, कैन आई से गाइस, देखो, बैंक इज अ क्लास, एंड इफ आई कैन, अगर मुझे इस बैंक का कुछ कुछ, इफ आई वांटेड टू एक्सेस एनीथिंग, सपोज ए बी सी डी, it will have something else, it will have a lot of things. So if I wanted to access anything which is here inside a bank, what I need an object, right? है ना? To Yes. access everything, and we have a Mayuri. Okay, and if I can, or if I will give this object to Mayuri, I will hand over this object to Mayuri, obj of bank. Can we say Mayuri can access everything which is present in a class? This Yes. lucky, is it making sense? Yes. So what we do in aggregation, मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? This much is clear to you? Yes. What we do in aggregation, very simple, बहुत simple. Suppose, same example, I have a class bank, and second class, can I say Mayuri is also a class? Can I say Mayuri? Yeah, or class person. So from person Mayuri is coming, right? Class woman. Okay, is that clear? Hmm, Yes. इतना समझ आया? Okay, so to understand this, so okay, we have Mayuri, and if I can give the object of bank to the Mayuri, so Mayuri can access everything. That is clear. Okay, is that clear, guys? ये देखो, अगर मैं Yes. इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एंड if I will hand over this object to the Mayuri, she can access everything which is there inside a bank, right? Okay,
So can I say Mayuri is also a class? Let's say she is also class. Okay, so she is Mayuri. Here we have Mayuri. Okay. So what I can do in aggregation? What we do? We create object of one class into another class. Listen carefully, very careful. This Mayuri needs an object of bank. So it needs object of bank. एंड हम ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, विदाउट इनहेरिटेंस नहीं कर सकते. आप ऑब्जेक्ट भी एक एक क्लास से दूसरे क्लास में पास कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं पास कर सकते. सो आई नीड ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक हियर. अगर मयूरी की बॉडी के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है बैंक का, तो सी कैन एक्सेस एवरीथिंग विच इज हियर इनसाइड बैंक. कैन वी डू इट? कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक इनसाइड मयूरी? Can we create an object of one class, so class bank, into another class, class मेरी? समझ आया? बताओ. हाँ मेरी लकी, समझ आया? Sir, will you please repeat once again? Yeah, I will repeat. It is not the first time we are doing. Okay. Okay, fine. Let's see. Suppose we have a bank, class bank, and second we have the class person. Let's say person. Okay. Is that clear? Okay. Yes. Fine. लकी आवाज आ रहा है? लकी आवाज आ रहा है अभी? ओके. सो कैन आई से, अगर इस पर्सन को ऑब्जेक्ट मिल जाता है बैंक का, किसका? बैंक का. सो दिस पर्सन कैन एक्सेस एवरीथिंग विच इज हियर इनसाइड अ बैंक, राइट? Yes. सो कैन वी डू समथिंग लाइक दिस गाइस? कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? कैन आई क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक inside a class person? Can I create object of bank inside a person? Can I write something like this? Bank Yes. obj is equal to new bank. समझ आया? Yeah. Yes. And as we have object here, can I access everything which is here? Yeah, we can access because Yes. we have an object. So I will write object dot money. Are you getting this? See, we have not did inheritance. What we did simply in aggregation, what we do, we create an object of one class into another. समझ आया? हम्म, बताइए. Yes. लकी समझ आ रहा है? Okay, let's see. With the code wise, it will make more sense. Okay, and of course, आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? पर्सन का बनाओगे, because person can access the data of bank as well and itself as well. Okay, so I will make this code very easy so that you can understand it. Okay, let's see. It is so easy. Okay, don't worry. It is so easy. Um. Okay, so I will just remove everything from here. Okay, so this is the code we have written last time. So I will just remove everything. Hi, Lucky. आवाज आ रही Sorry, है? sir. नो प्रॉब्लम. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आया? मैं इस बार लगता है तो मुझे हाँ हाँ हो रहा है. हाँ हाँ हाँ, कर दो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. देखो, अभी आ रहा है ना साउंड? हाँ. ओके, देखो. सपोज वी हैव क्लास बैंक. ओके, सो आई विल, कैन आई राइट समथिंग लाइक बैंक? या, लेट्स राइट बैंक. ओके. Lucky, do you want to be bank manager in future? Would you like? No, I'm not good in maths. Okay, it's fine. You can just sit and enjoy. You just have to give order. You don't have to do maths. Okay. That would you like to have this bank? Would you like to have a bank manager? Okay, If so I yeah, pass orders, so I'll like be a bank manager. yeah, great. I hope you will be bank manager soon. Okay. Um, suppose we have bank, and if I will get, if somehow I can get the object of bank. Okay, मुझे अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है बैंक का, तो कैन आई एक्सेस द एवरीथिंग विच इज रिटन इनसाइड अ बैंक विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक? या,
लकी, व्हाट डू यू थिंक? लकी, आवाज आ रहा है अभी? बताइए, आवाज आ रहा है? मेरे सामने आ रहा है। Yes. इसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखो। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, मेरे आपको बेसिस बनाएगा। ठीक है। सपोज आई हैव अ बैंक, and if I will get the object of bank, okay, so with the help of object I can access the all property inside a bank, right? Which is being inside a bank, which is there, right? है ना? Everything I can access. if i Yes. if I can give this object to a person, let's say we have a class person or person, simple. If I will just give this, if I can give this object to a person, okay, so here this person have the object of bank. Okay, so is it possible that this person can access the property of this bank as well, as it has the property of, it has an object of the bank? हाँ, Yes. या सो ये पर्सन को, ये जो पर्सन है इसको अगर मैं निकाल दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि कैन आई राइट पर्सन समथिंग लाइक दिस, दिस, एंड कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, दिस इज पर्सन। हम्म मैं भी समझ आया? Yes. पर्सन इज अ क्लास ना। सपोज आई विल हैव, Yes. सपोज आई विल हैव ऑब्जेक्ट, मुझे मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आई हैव एन ऑब्जेक्ट, बट वी कैनॉट पास दिस ऑब्जेक्ट टू दिस पर्सन क्लास, ये भी ये क्लास है, ठीक है, इट इज अगेन अ क्लास। सो वी कैनॉट पास दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू अदर क्लास, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर करना है तो आपको इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा। सो वी कैनॉट पास दिस ऑब्जेक्ट from one class to another class, it is not possible। if you wanted to pass the object, we have to use inheritance, बट मैं पास नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये ऑब्जेक्ट इसी के अंदर क्रिएट कर लूं? कैन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास? Yeah, let's try. We can write bank obj is equal to new bank, right? समझ आया? And as we have object of bank, we can access everything which is here. समझ आया? obj dot everything. Whatever you wanted to access, obj dot. Making sense? Yes. Okay, fine. So what is aggregation? In aggregation, what we do? We create object of, create an object object of one class into another, है ना? इजी, हाँ मेरी, इज इट इजी? Yes. हम्म इजी है ना? हाँ. ओके, देख करते हैं। आई विल लेट क्लास, लेट्स से क्लास बैंक। what bank can have, बैंक कैन हैव, सी दिस इज नॉट अ रॉबरी सेशन, हम रॉबरी नहीं कर रहे यहाँ पे, ये बस एक क्लास है। ठीक है, आई होप कि मैं सेफ रहूंगा उसके बाद में। तो सपोज द बैंक विल हैव मनी, so can I write something like this, money, which is here, uh, and money will be so lot of money, right? So let this much money this bank have, okay. Then it has some property, bank can also have a gold, right? है ना? Yes. So can you write string gold, and what actually the unit of gold? hmm? गोल्ड हम कितने तोला में बोलते हैं ना, इतना तोला है उतना तोला है, बराबर है। Yes. अब तोला को टी में लिख देता हूँ तोला को कैसे लिखे? तो मैं इतना, जो दिस मच टी इज द गोल्ड। इट ओके, बैंक कैन हैव अ प्रॉपर्टी एज वेल ना, प्रॉपर्टीज जो होती है, जो जिसको लोन देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज रखते हैं, बराबर है ना? Yes. तो प्रॉपर्टीज भी होती है। तो प्रॉपर्टीज में क्या रखते हो? प्रॉपर्टीज में क्या रखे? प्रॉपर्टीज ऑफ, व्हाट वी कैन से, मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ
peoples. Okay, properties of peoples. Okay, fine. Okay, so this three things, banks can have a lot of things as well. Okay, and it can have a function as well. I am not saying to rob this, okay, guys. Okay, Mayuri, but we can function. We can have a function like void rob, and we will write. Uh, we will print everything. Okay, I hope I am same safe for this. I will write money and gold. Okay, and properties. Okay, let's remove this rob. I will write access. ठीक है, ये सही रहेगा ना? रॉब रॉब लिखने से अच्छा है एक्सेस, ठीक है ना? हाँ. ओके, सो इफ आई वांट टू एक्सेस आई कैन डायरेक्टली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक. अगर बैंक है यहाँ पे मेन के अंदर बैंक बनाता हूँ, बैंक s1 इज इक्वल टू न्यू बैंक, देन आई कैन राइट s1 डॉट एक्सेस. Okay, I can again access like money, I can access properties, I can access the gold, है ना? ये भी access कर सकता हूँ. But I don't want to do this. I wanted to access the data of one class into other class. We are not accessing it to the other class. Can I create other class? Class person. Okay. And हम यहाँ से इस क्लास से इस क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते हो, बट इनहेरिटेंस लगेगा. So how we can pass? Can we do something like this? I will create a bank object of bank here. I will write bank s1 is equal to new bank. Yeah. Hmm. ठीक है. Yes. And this person will have a name, right? It will have age, right? Age. I will write age is equal to. I am just writing here randomly, but आपको getter setter भी यूज करना है. But example के लिए मैं directly बता रहा हूँ. It has a name, string name. Let's say it is you. Okay. Mayuri, you are not 26, right? How many? How? Okay, just ignore this. You are not 26, right? Hmm? How young are you? 19. Sorry, 20. Okay, 20. Age, name, and okay, what we can have? We can have string phone number. We can have phone number. We can have, okay, let's say gender is equal to, we'll write, there is a no need to specify the gender here. Okay, नाम से पता चल रहा है, but okay, it's fine. We'll use this age. This property you have. Okay, so I have this s1 object as well. Can I access here s1 dot? Hmm? Uh, can I access s1 dot money? Okay, I think so. We have to make it public. Yeah, let's try something. I will let public, and it is saying class bank is public should be declared in the file name bank dot java. Huh? Okay, ये मैंने अलग बनाया क्या क्लास? ये तो इसी के अंदर बनाना था. ये क्या कर दिया? Okay, I will just remove this. ये मैंने कहाँ पे बना दिया? तो I will just cut it and I will bring it to the same file. ठीक है, सेम फाइल के अंदर लगते हैं और यहाँ पे निकाल देते हैं. s1 dot should access. Okay. Oh, okay, fine. हाँ, तो oh, let me just try void test. Yeah, this should be the problem. Void test s1 dot. Yeah, अब सी मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि जब हम जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, तो वी क्रिएट, सबसे पहले क्या बनाना होता है? वी क्रिएट अ क्लास, वी क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, देन वी राइट द कोड इनसाइड दैट मेथड, राइट? है ना? समझ में आया? Yes. बट यहाँ पे हमारे पास S1 ऑब्जेक्ट है, तो S1 को अगर मैं बोलूँगा S1 डॉट एक्सेस, S1 डॉट कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास, बिकॉज मेथड मिसिंग है. ये जो चीज़ें हैं जिसको हम, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें ये मेथड के अंदर होना चाहिए. तो ये चीज़ें हमने तो मेथड ही नहीं बनाया. तो कैन आई समथिंग लाइक दिस वॉइड डिटेल्स, समथिंग लाइक दिस डेमो या फिर टेस्ट. वॉइड टेस्ट पैरेंथेसिस. So inside test, what I will do, I will print all of this, which is the data of you. Okay, the age is plus age. Okay, then name is plus name, है ना?
Then then gender is plus gender. Okay, but along with your own data, can I print something like this? Can I print system dot print s1 dot gold, s1 dot money? Yeah, we can do it, right? System dot print s1 dot properties है ना, then s1 system dot print s1 dot gold किया ना? हम्म, मेरी समझ आया Yes. प्रोग्रामिंग? हाँ. So what I have did, I have created an object of one class into other class. So this, and I'm using all of this, I'm accessing here. समझ आया? But in inheritance तो है नहीं, but still I can access the property of one class into other class by simply creating a object of one class into other class. आया समझ में? Yes. And now of course, अभी मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा मेन के अंदर? आपका ना, बराबर है? Not okay. Yes. Person, let person I will let Mayuri, okay, is equal to new person. ठीक है, and then I will write Mayuri dot test, है ना? And inside test we are printing everything. And if we will just write, if you will just run this program, we can see, right? You will get your age, your name, your money you have, this much money you have. Imagine this much money you have. What will you do if you have this much money? Any plans do you have? You have money, you have Happy properties. life. Hmm? Live happy and luxurious life. Oh wow. Uh, I hope you will earn this much money. Okay. I will wish you to have this much money and have a luxurious life. Okay, great idea. Means that is great to have after this much money. Everything is easy, right? No stress. Hmm? You can do whatever you want to do. Okay, so this Yes. is this is money. This much money you have, and this is your data. So what we have did, we have created an object of one class in the class. Yeah, and it is called as an aggregation. है ना easy? Yes. One more thing, it is not an inheritance. And see, can I say something like this? This S1 object, can I say something like this, Mary? This S1 object has a relationship with person. Yes. It is not a easy relationship. Hmm? It is not easy Yes. relationship. क्योंकि ये अगर मैं निकाल दूं तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा. हाँ. अगर है तो रिलेशन, तो इनहेरिटेंस ऐसा थोड़ी है कि तो है तो रिलेशनशिप है, नहीं है तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. नहीं है तो भी रिलेशनशिप होता है ना. Yes. तो इसीलिए यहाँ पे जो हम ये लिखते हैं ना, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एग्रीगेशन, एंड दिस मीन्स हैज अ रिलेशनशिप. अगर ये नहीं होगा तो आप इसका डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे. बराबर है? हम्म. जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना हमारे, हैज अ रिलेशनशिप होता है ना फ्रेंड्स के अंदर, कि नहीं होता? होता है. जब जब तक बनती है तब तक चलता रहता है. जब बनता नहीं तो फिर तो जो चीज़ें हम पहले उनसे लेते होंगे या एक्सेस करते होंगे तो वो तो बंद हो जाती है, वो तो मिलेगा नहीं. बराबर है कि नहीं? Yes. या फिर हम उनको जो चीज़ें देते थे वो भी बंद हो जाएगी. आप तो देंगे नहीं, क्योंकि नहीं नहीं बनता है तो फिर नहीं देंगे, क्योंकि हैज़ अ रिलेशनशिप जो है ना वो टूट सकता है. क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर ये चार सारी चीज़ें मुझे मुझे नहीं करते आएगी ना. बराबर. हाँ. बट इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता. अगर सपोज, ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट दैट पर्सन लॉस्ट, हमारे एंसेस्टर्स है वो बहुत पहले हो रखे, वो दे लॉस्ट, बट स्टिल देयर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इनसाइड अस, राइट? Yes. यानी वो उन पे डिपेंड नहीं होता है कि वो है या नहीं है, बट स्टिल अपना प्रॉपर्टी, उनका प्रॉपर्टी अपने पास होता है ना. हाँ. सो दैट इज कॉल्ड एज इज रिलेशनशिप. ठीक है. हम्म. समझ हाँ. आया? Yes. ओके, दिस इज एग्रीगेशन. इज इट इजी?